Maira, can you do the fill in the blanks? Okay. ये सेंटेंस यहाँ पे ये पिक्चर में समझा रहे हैं हम. द कैट इज ऑन द कॉट. तो बच्चे को ये पिक्चर देखकर भी सेंटेंस समझ में आएगा कि यहाँ क्या लिखा है. अगर उनको पढ़ने नहीं आ रहा है तो फिर भी वो पिक्चर को देख के समझ सकेंगे कि ये सेंटेंस ये बोल रहा है. अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, उनको समझ में आएगा कि कैट बैठा है कॉट के ऊपर. इसकी समझ बच्चे को होगी. तो स्टार्टिंग में जब हम बच्चों से सेंटेंस रीडिंग कराएंगे तो इस तरीके के पिक्चर्स के थ्रू उनको समझाते हुए करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए बहुत न्यू होता है. तो हम बच्चों को इस तरीके से स्टार्टिंग स्टेज में इंग्लिश इस तरीके से समझाएंगे. आगे चलते चलते तो वो खुद से समझ जाएंगे, खुद से बोलेंगे. अभी जो पैंडमिक चल रहा है इसके वजह से बच्चों को इंग्लिश टॉकिंग में बहुत ही इफेक्ट हुआ है. अगर स्कूल जाते तो बच्चों के साथ रहते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हुए आसानी से अब तक इंग्लिश बोलना सीख जाते थे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी इंग्लिश टॉकिंग में बच्चों के लिए. तो हम लोग का ये पेरेंट्स के ऊपर बहुत भार हो गया है कि बच्चों को इंग्लिश टॉकिंग के लिए हम कैसे एंकरेज करें. तो जब भी बच्चों के क्लासेस चलते हैं या ऐसे सेंटेंसेस उनको मिलते हैं तो हम उनको बहुत फोकस करवाएंगे. घर में डेली इंग्लिश टॉकिंग करते रहिए, सिंपल सेंटेंस से. और जब भी उनको ऐसे होमवर्क्स मिलते हैं तो आस्क देम व्हाट दे सी हियर एंड व्हाट दे अंडरस्टैंड. सो इस तरीके की प्रैक्टिस से हम बच्चों की इंग्लिश टॉकिंग, इंग्लिश रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कराते हुए उनको इंग्लिश बोलने और गुड स्पीकिंग की ओर ले जा सकते हैं. सो मायरा, कैन यू डू दिस? Okay. The cat is on the cot. Let's write and Excellent. cot. Be careful, Mama. It should not come out, okay? It should be on the line, right? The pot is in the bed. Yes. The pig. You're eating this? You're hungry? Oh, Read the second one. Read. T has this. This is a jar. Somewhere small J will start from the back. Hey. No much spacing while you write words. Okay. Next. Next is the pig. Fat is very fat. The pig. Read the sentence. What is it? The pig is on the log. Next. Next, the pot. You read the sentence. How did you get it? Is pot or pit? Read full. The dash is in the pit. So what is in the pit? The pot. Right. Pot. Next one. Next one is I will read it. The pot is in the pit. Yes. The nut is in the net.
this. The rat is The rat is on the mat. next. Next, the tag is on the hat. Excellent, right. तो देखिए इस तरीके से बच्चे को पिक्चर देखते हुए सेंटेंस की समझ होती है और वो वर्ड आइडेंटिफाई करके ब्लैंक फिल करेंगे। इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों को जब भी हम उनके साइट वर्ड्स और सेंटेंस रीडिंग करवाते हैं इनिशियल स्टेजेस में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए किड्स लर्निंग नेस्ट को। सॉरी, हमारा नेम चेंज हुआ है मायरा एंड मम को, फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग एजुकेशनल एंड अदर फन एक्टिविटीज़। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।